Okay, bachon. So differential equations, there is nothing new than differential equations. The same concepts of differentiation and integration will be applied together in this concept. Differential equation, we have already been forming differential equations in the previous topics, even in AS differentiation and even in A2 differentiation, but now we will be solving those equations. And how do we go about making and solving differential equation? We'll be using all the concepts of differentiation and integration that we have learned. एक आध छोटा मोटा the concept that people might not have come across or as per your level, वो जरा मैं बता दूं कि अगर if I want to find out the rate of change of volume, that is dv by dt, इस बात पे agreed है या नहीं है? तो मैं कह सकता हूँ v of rate in minus v of rate out. Can I say that? अगर मुझे rate of change of volume in a container निकालना है, so simply I can say that it is the rate of v in minus rate of v out. तो अगर कभी कोई चीज एंटर भी हो रही है और निकाली भी जा रही है, इसमें इक्विवेलेंशन वगैरह भी आता है, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट और यूर नॉट योर लेवल. तो इसमें ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें इंटीग्रेट होगा. तो किसी भी चीज का अगर आपको रेट देखना है, ओवरऑल रेट का चेंज देखना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी इज द रेट ऑफ increase of that quantity minus the rate of decrease of that quantity if both the changes are occurring simultaneously. अगर वो quantity बढ़ भी रही है, साथ साथ वो कम भी हो रही है, so this is how you find the overall rate of change. बिल्कुल ये भी कर सकते हो तुम, सही है ना? So this is rate tm by dt अगर मैं दूं तो उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास एप्लीकेबल होगा. अगेन इसमें नो न्यू कॉन्सेप्ट, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पढ़ा है उसी के ही चीजें होंगी. अभी वील बी डूइंग द क्वेश्चंस, तो बहुत आसानी से तुम लोग समझ जाओगे. पूरे कुछ ओ लेवल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसमें रिव्यू होंगे. अ सर्टेन कर्व इज सच दैट its gradient at a general point with coordinates x y is proportional to y square upon x. Just by reading this statement, this question, this is what you can say, right or wrong? Just by reading the very first statement. Again, इसमें बहुत ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स ही ज्यादा हैं, तो पहले लिखते जाओ, साथ साथ लिखो, ताकि भाई हम लर्न कर रहे हैं तो हम समझ सकें. ग्रेडियंट क्या होता है? What is gradient of dy by dx? So the question is telling us that dy by dx is proportional to y square upon x. Is this clear? Now what do we do? अगर हम proportionality का साइन हटा के इक्वेशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको k आ जाता है, बिल्कुल. तो k y square upon x. This is dy by dx. This is a differential equation. इसमें डेरिवेटिव्स और वेरिएबल्स दोनों मौजूद हैं. Is this clear? So we have done this. The question says the curve passes through the points with the coordinates 1 1 e2. ये तो curve के coordinates के points. That means I can plug it in. Once I have the equation of the curve, उसमें फिर मैं x की जगह I can plug in 1 and y की जगह I can plug in 1, x की जगह I can plug in e, y की जगह I can plug in 2. But once I have the equation, अभी तो मेरे पास equation ही नहीं है. Right now I just have a differential equation, right? Obviously, अब how do we integrate it? इसमें बहुत आसान से दो steps हैं. When we are integrating anything and I tell you कि अगर इस तरह dy या dx लिखा है, तो what does this tell you? ये चीज आपको क्या बताती है इंटीग्रल के अंदर? You integrate this entire thing with respect to x or with respect to y. अब इसमें दोनों variables हमारे पास simultaneously involved है. One basic step that we need to do before attempting to solve the differential equation is separating the variables. क्या करते हैं हम? Separating the variables. जहां dy है वहां सारे y के वेरिएबल्स चले जाने चाहिए, और dx को यहां क्रॉस में लेकर आके सारे x के वेरिएबल्स उस तरफ रखने चाहिए. So this becomes 1 upon y square dy is equals to k upon x dx. What have we done? We have formed a differential equation. Now we are attempting to solve it.
And whenever we are attempting to solve a differential equation, the very first step that we need to do is separating the variables. अच्छा, k was a constant, k को मैं उधर ले आके डिवीजन में भी रख सकता था और यहाँ न्यूमरेटर में भी रख सकता हूँ, k की कोई लड़ाई नहीं है. नहीं, क्यों k अपॉन वाई स्क्वायर कर सकते, कर ही नहीं सकते. k अपॉन 1 अपॉन k वाई स्क्वायर हो जाएगा. सही है ना, k इज अ कांस्टेंट, स्पेसिफाई हमने कर दिया है, ठीक है ना. Have we separated the variables? Now we integrate both sides. यही दो बेसिक स्टेप्स हैं टू सॉल्व एनी डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या है पहला स्टेप, क्या है? सेपरेट द वेरिएबल्स. क्या मतलब है? जहां dy है वहां सारे y के वेरिएबल्स चले जाने चाहिए. जहां dx है वहां सारे x के वेरिएबल्स चले. नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स. Can you integrate both sides and let me know? Remember, the left side will now be integrated with respect to y, and the right side will be integrated with respect to x. बच्चे दो, देर आर टू अप्रोचेस टू डू इट. मैं दूसरी अप्रोच भी बताऊंगा, पहले एक बेसिक, द कन्वेंशनल अप्रोच विद आर्बिट्री कांस्टेंट. आपने इसको इंटीग्रेट किया. व्हाट इज द लेफ्ट साइड? कोई बता सकता है इंटीग्रेट हो गया क्या ही है? -1 अपॉन y. एंड व्हाट अबाउट द राइट साइड? k ln x हो जाएगा. k को बेशक बाहर रख सकते हो, इट्स अ कांस्टेंट. 1 अपॉन x का इंटीग्रल इज ln x, k ln x. नाउ यू नीड टू ऐड अ c प्लस c कांस्टेंट. कांस्टेंट की कोई लड़ाई नहीं है कि आप राइट पे प्लस सी करें या लेफ्ट पे प्लस सी करें, डजंट मैटर. कोई लड़ाई नहीं. इज दिस क्लियर? फिर हाउ डू वी फाइंड द कांस्टेंट? रिमेंबर नाउ देयर आर टू अननोन कांस्टेंट्स. एक तो सी है, द आर्बिट्री कांस्टेंट दैट वी गेट आफ्टर इंटीग्रेटिंग एनीथिंग, और दूसरा k है. हाउ डू वी फाइंड k एंड c? जब तक k और c नहीं आएगा तब तक वी विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x. Very good. Now we can plug in 1 and 1, x की जगह 1, y की जगह 1, and x की जगह e and y की जगह 2. And you solve these two simultaneously. And please tell me the values of k and c that you get. I'm waiting class. Let me know the values of k and c that you get. This is the first method of solving differential equation. Yes. Okay. K is half as per Heather, and c is -1. So once you get this equation, this is your equation. Now you need to express it y in terms of x. You need to make y the subject of the formula, right? If anyone else is getting any other form, please let me know. बिल्कुल y को subject बनाना, that's it. आसान ट्रिक बताऊं, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई विद अ नेगेटिव साइन. देखो जरा, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय -1. So you get 1 upon y, 1 minus ln x upon 2, right? Then you take 2 as the LCM. So 2 minus ln x is equal to 1 upon y. Then you reciprocate both sides. If single fraction आ गया, once you get the single fraction, you can reciprocate both sides. Is this clear, बच्चों? इसका alternate method भी बताऊंगा, but first let's just go through this method. Once you get it in this form, these are the steps that you can take. Let me know when you people are done. Let me know if you are unable to understand anything.
सर हो गया। Good. What about the rest? If you have any question, please feel free. Done? Yes, class. Are we done here? Done, sir. Good. Okay. Now, another way to solve it, or I don't know why, but I really encourage this method. ये बहुत आसान लगता है. Again, separating the variables, still the same thing. यहाँ क्या change होता है? Here, what did we do? We integrated both sides, right? And we used indefinite integrals. What if we could have used definite integrals? हम integrate तो एक ही दफा करते हैं, and then we would have said कि जब y 1 है, x भी 1 है, and when x is e, y is 2, right? So what basically can we do? If we do this, we can get the value of k. Again, we have already integrated. अब हम क्या कहेंगे? Listen to this. When y is 1, x is 1. When y is y, x is x. So instead of putting values as limits, we can put variables as limits. Same thing, but in these steps, we don't have to add the arbitrary constant after integration. Is this clear? एक दूसरा वाला भी और करेंगे, उसमें और हम different integrals का usage सीखेंगे. That helps us a lot. Clear है या नहीं है? Is this clear, class? जी सर। Have a look at this question. The variables x and y satisfy the differential equation this. They've given us the domain that for x between 0 and half pi, x is 0 when y is quarter pi. Solve this differential equation and find the value of x when y is pi by 3. सबसे पहला काम है solve the differential equation. How do we solve this differential equation? What is the first thing that we do? Separate the variables. जितने y वाले हैं, you take them with dy, और जितने x वाले variables हैं, you keep them with dx. तो dx left पे divide हो रहा है, on the right it will be multiplied. So this is what I get: 4 tan x dx and 1 over cos square y dy. Now see, I've used definite integrals. And how have I used it? It's very easy. Once you do that, you don't need to add plus c. While integrating, I say that x is 0 when y is pi by 4, and x is x when y is y. Is this clear, Heather? Trust me, this will help you in the long run. But there is a reason I insist on this method. वो भी सही है, plus c वाला भी सही है. Don't worry, वो आगे step मत देखो, पहले ये बात समझो. Separating variables and going on to integrate them using definite integrals. X है जब y है, and x is 0 when y is pi by 4. Okay, now how do we integrate this? Tan को तो integrate करेंगे, but what about this? How do I integrate 1 over cos square y? I've told you कि trigonometry में जब power आती है, तो उसको कैसे integrate करते हैं? Either we use double angles or we use known derivatives. Yes. सही है. फिर पाई 4 को अगर अपर लिख रहे हो तो 0 को अपर लिखना x पे से. हम इसमें रिलेटेबल लिमिट्स लगा रहे हैं. सही है. असल में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज व्हाट वी डू, राइट? तो y को तो हम सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं ना, इसलिए y को अपर लिमिट लगाते हैं. ठीक है इधर. तो अगर आप 5/4 का अपर लिमिट लगाएंगे तो फिर 0 का अपर लिमिट लगाएं, और फिर x और y को लोअर लिमिट लगा लें. Yes class, how do I integrate 1 over cos square y?
We have just done integration. How do I integrate 1 over cos square y? Anyone? Sec square y से. Very good. Shabash. We'll convert it into sec square y because we know that sec square y is the derivative of tan. Hence, its integral will be tan y. And how do I integrate tan x? How do I integrate tan x? Tan x is sin x upon cos x. Yes, class? नीचे cos x है in the denominator and उसका derivative numerator में अगर आ जाए, cos x का derivative क्या होता है? Not derivative. I am asking tan x can be written as sin x over cos x. I have cos x in the denominator. उसका derivative क्या होता है? ऊपर minus तो नहीं, I have a sin x in the numerator. So I can put a minus और एक minus integral के बाहर भी लिख देता हूँ. सही है? Yes. I can eventually get the integral of tan x as minus ln cos x. The upper limit मैंने लिया x. When x is x, y is y. When x is 0, y is pi by 4. अब आप करें, पहले मुझे बताएं. Solve the differential equation. Once I put in the limits, क्या? tan x क्या है मेरे पास? sin x upon, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर चाहिए होता है मुझे, राइट? सो आई कैन पुट अ माइनस हियर एंड आई कैन पुट, ये मैं -4 कर देता हूँ बेशक चाहूँ तो. स्टिल द सेम थिंग, राइट? या मैं -4 ना करूं, -1 इस तरह लिख दो. इट्स द सेम थिंग. क्लियर है? अब नाउ द फंक्शन इन द डिनोमिनेटर एंड इट्स डेरिवेटिव इन द न्यूमरेटर. दिस कैन बी रिटन ln cos x. अभी माइनस को बेसिक चाहे बाहर लिख लो या ln के साथ लगा लो, इट्स द सेम थिंग. ये लो. अब सही है? सही है? cos x in the denominator and its derivative in the numerator. This part, the integration becomes ln cos x, and obviously वो negative है, so it's a multiply. Okay, this is what we get. Okay, class. Once you apply the limits and you simplify, this is the point where you have solved the differential equation. I repeat, if we are using definite integrals, once you plug in the limits and you simplify, you have solved the differential equation. उसके बाद आप फिर you're just manipulating it. X को subject बनाओ, उसको subject बनाओ. That is just manipulation. When the question says solve, sir, इस point पे solve हो गई है. This is what should be in your head, sir. This is solved at this point. Is this clear, class? पूरा ln cos x की लिमिट्स है. मॉड में लिखते हैं, ln mod of the function लिखते हैं कि अगर कोई नेगेटिव उसकी इनपुट ना हो जाए, क्योंकि ln नेगेटिव तो फिर ऑपरेट नहीं करता. Is this clear, class? The differential equation is solved अगर आप definite integrals use नहीं कर रहे. If you are using indefinite integrals without the limits, then once you find the value of plus c, you will say that your differential equation is solved. Plus c की वैल्यू निकाली, पुट की, सॉल्व हो गया. उसके आगे you are just manipulating it because the question says इसको इसके टर्म्स में लिखो, इसको इसके टर्म्स में लिखो, which will not always be required. Just like in this question, उसने मांगा तो नहीं है इसको इस फॉर्म में दो, उसको इस फॉर्म में दो. The question just said solve the differential equation. इस पॉइंट पे you have solved the differential equation. अगर आप यहाँ भी छोड़ देते, the differential equation is still solved. It's done. Is this clear or not? So we have solved the differential equation. If anyone else is getting any other answer, please let me know. ये दोनों में से किसी form पे you could have stopped. The differential equation solved. Now the question says find the value of x when y is 1 over 3 pi. Y की जगह plug in 1 over 3 pi.
The question is not asking you the exact answer, but I have always urged you people to understand how to get exact answers so that when you're required to do so, you can easily do that. Tan of pi by 3 is what? Under root 3. 4 ln cos x इधर आ गया, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया. 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हुआ, एंड द एंटायर थिंग बिकम्स द पावर ऑफ e वंस यू रिमूव द ln. ये चीज ये देख लो जरा, बहुत आता है व्हेन यू लुक इनटू द मार्किंग स्कीम. फिर तुम लोग आगे बोलो सर मार्किंग स्कीम में तो ये लिखा था. दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. ये दोनों एक ही बात है अल्लाह के बंदो. ऑब्जर्व, both of these notations mean the same thing. Is this clear? अब ये पूरे का cos inverse करना है. This is the answer that you should get. Is this clear, class? Clear है बच्चों? जी सर. What about the rest? Just one G. जी सर. Okay. The variables x and t satisfy the differential equation 5 dx by dt 20 minus x 40 minus greater than x is 10 when t is 0. Question खुद guide कर रहा है. It is giving you hints. Using partial fractions solve the differential equation. Obtaining expression for x in terms of x. सबसे पहला काम आपने क्या करना है? Separating variables. कैसे करेंगे इसमें separating variables? How do we separate the variables in this form? क्या करें बताओ? क्या स्टेप करें? 5 की तो कोई मसला नहीं है. 5 का तो कोई वेरिएबल नहीं, इधर रहे उधर रहे, कोई लड़ाई नहीं है. dt goes on this side, then what? नहीं, dx ऊपर है, उधर जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा. किधर? 20 माइनस एक्स और 40 माइनस एक्स दोनों उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे. So this is what you should get. Is this clear, class? Now we know कि सर अगर हम इसको इंटीग्रेट करना इनिशिएट भी करें तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे. So the question has given us using partial fractions. So first, can we just break this down into partial fractions? या 5 again उधर जाके डिवाइड भी कर देते तो कोई हमारी लड़ाई नहीं थी. 1 अपॉन के साथ भी इस पर्टिकुलर टर्म के partial fractions हम बना सकते हैं. बनाओ जरा इसके partial fractions. Tell me what do you get? Yes, class. Please break this down into partial fractions. Now the question is saying obtaining an expression for x in terms of t. X is equal to करके लिखना है. Final answer, x in terms of t. Yes, class, what are the partial fractions that you people are getting? A 1 partial, upon 4 minus 1 upon 4. very good. 1 upon 4 and minus 1 upon 4, right? जी. पूरे को तो चाहो तो बाहर कॉमन ले सकते हो 1 upon 4 को, or you can just take 1 upon 4 common and multiply the other both sides by 4, तो 4 dt के साथ भी आ जाएगा. दोनों तरीके हैं उसके. And then you integrate. How do you integrate? 1 upon 20 minus x
and then 1 upon 40 minus x. Balance so. Very good. ln के लिए ख्याल रखो, the function in the denominator must have the derivative in the numerator. 20 minus x का derivative is -1. Do I have a -1 in the numerator? Multiply करें से बिल्कुल सही है, तो I get minus ln 20 minus x. इसमें ऑलरेडी अच्छा, इसमें भी ख्याल रखो, if you are considering this -1 to be a part of the numerator, then you add a +1 over here. फिर आप यहाँ +1 करेंगे, या आप ऊपर अगर -1 बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करें and you get plus ln of 40 minus x. Again we are using definite integrals कि जब t है तो x है, and when t is 0 x is 10. Yes class. Done class. Remember, we need to write the entire equation by making x the subject of the formula, x in terms of t. Please let me know the exact thing that is bothering you or troubling you or you are unable to comprehend. Yes, बच्चों. Okay.
did we say? We still need to use these limits, right? Upper limit is x, x की जगह x ही डाल दिया, minus lower limit is 10. जहाँ जहाँ x है we plug in 10 over there. So that is how we use different integrals to solve differential equations. वरना फिर plus c लिख के भी काम किया जा सकता है if you don't want to use the limit. But trust me, using the limits will make things very easy for you. Good, बेटे. What about the rest? Done, sir. Same answer? G. Good. Another. Another thing, the next part is asking, what happens to the value of x when t becomes large? Remember, okay, I'll tell you. When t becomes large. Okay, one thing, let me tell you very clearly. This is the point where you have solved your differential equation. So be very careful. इस point पे you have solved the differential equation. इसके आगे you are just manipulating it. So you never know, you might be in need of any one of these forms. Am I clear about it? You might need this kind of form in the next question or this one. So once you solve it, you should clearly write it for your own self कि यहाँ पे मैंने solve कर दिया है. अब मैं इसको आगे सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा हूँ and I never know कि इन मैनिपुलेशन में से कौन सी वाली फॉर्म की मुझे आगे जरूरत हो जाए. सही है? So be very clear, होता है क्या इस फॉर्म की जरूरत होती है, बच्चे दोबारा उल्टी स्टेप्स करते हैं. नो नीड, यू मस्ट हो गया मैंने इसी को मैनिपुलेट करके इस फॉर्म तक लाया. So the question says when t becomes large. Now what is the issue here? Sir, t अगर large कोई चीज डिनोमिनेटर में बहुत large होती है ना, तो we can comment that the entire fraction becomes 0. Anything divided by very large means infinity. Anything divided by infinity is 0. सर यहाँ पे e न्यूमरेटर में भी है और e डिनोमिनेटर में भी है. वी कैन नॉट कमेंट के इसके e के बढ़ा t के बढ़ाने से, बिकॉज t इज द पावर ऑफ e. t becomes very large, what will happen to x? तो पहले इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है. ऊपर से e की पावर 40 और नीचे से भी e की पावर 40 कॉमन लो. Why am I doing that? ताकि e मेरे पास सिर्फ डिनोमिनेटर्स में आ जाए and then I can predict that once it becomes very large, what will happen to the entire value. E to the power 40, e to the power 40 cancelled out. अब e comes in the denominator, e की power 40, यहाँ पे भी e की power 40 the denominator. What will this become? ये पूरा क्या हो जाएगा? When t becomes very large means infinity. If t becomes infinity, तो ये पूरा infinity हो जाएगा e की power 40 and this entire thing will become 0. ये एक पॉजिटिव नंबर है 2.71828, राइट? लिसन ना, ये एक पॉजिटिव नंबर है 2.71828. टेक एनी पॉजिटिव नंबर और उसकी पावर को बहुत बड़ी डाल दो. समझ लो 3 की पावर डाल दो, 3 to the power 1 billion. The entire number will become infinity, right? Is this clear or not?
So whenever a positive number has a very large power or infinity, the entire value becomes infinity. So this 40 divided by infinity, this is 0. 1 divided by infinity, this is also 0, and I'm left with 60 upon 3, which is 20. Is this clear, class? Yes, sir. Sorry? Very large power of E, and once it's in the denominator, किसी भी positive number की, if it is a very large power, anything positive number to the power infinity is infinity. Is this clear? Let me just have a look at this. Another question. Jaldi se isko dekh lo. We have around 2 minutes left to end the class. बस इसी क्वेश्चन पर आज हम conclude कर लेंगे. जरा have a quick look at this one. Again, what do we need? 20. 60 upon 3 बचेगा. Okay, class. What is the first thing that we must do here? हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? Separating variables. Separate. Very good था. All the variables of y with dy, dx को ऐसे cross multiply करो. All the variables of x with dx. And now we integrate x plus 2. हमें पता है, ये पहले भी हम कर चुके हैं. Integration की with ample practice, you'll come to the conclusion, sir, x plus 2 upon x plus 1 को मुझे long division करना पड़ेगा. इसकी एक ट्रिक मैं पहले बता चुका हूं. अब x plus 2 है, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है ना. How do you make it 1? You'll say, sir, x plus 2 में subtract 1 and I add 1. So now I can break it down with x plus 1 and plus 1 मैं अलग लिख सकता हूँ. ये वाली वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी. I get this as 1 and this will be 1 upon x plus 1. याद है, वरना लॉन्ग डिवीजन से भी आ सकता है. x plus 2 upon x plus 1. लॉन्ग डिवीजन करके भी कोफिशिएंट और रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं. कोशेंट और रिमाइंडर, सॉरी. Now you integrate it. You can use different integrals, or if you're not using different integrals, always put a plus c on either one of the places.